ମୁଁ ରଞ୍ଜିତ OPSC ASO जनरल अवेयरनेस सिलेबस रो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग बेस्ट एमसीक्यूज नेकी आसीची। प्रथमरु शेष जाए भिडियोटी देखि मो सह थरे क्विक रिवीजन करि नियंतु। तो चलंतु स्टार्ट करिबा पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। या भितर कोटा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रो गोटे फीचर। एग्जीक्यूटिव इज रेस्पोंसिबल टू जुडिशियरी हबनी। एग्जीक्यूटिव इज रेस्पोंसिबल टू लेजिस्लेचर। तो यार करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर बी। देखो क्वेश्चन गुड़िक प्रथम रू शेष जाए देखो, जदि भल लगे तेबे जाइए लाइक शेयर कमेंट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सेकंड क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। लेफ्ट साइड अच्छी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन्स, राइट साइड अच्छी सोर्सेस। मैच करवा। फेडरेशन, फेडरेशन कौटू आसी कैनाडारू। ए हो 3, ये जगह 3 अच्छी, ये जगह 3 अच्छी। पार्लियामेंट्री फॉर्म कौटू आसी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ब्रिटिश रू आसी माने ब्रिटेन रू। तो बी हो 2, तो बी अच्छी ये जगह 2 माने करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर डी। सी हो जाउची 4, डायरेक्टिव प्रिंसिपल हो जाउची आयरिश जोटा कि आयरलैंड रू। तापर फंडामेंटल राइट्स होची यूएसए रू। तो करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर डी। ठीक अच्छी। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरो फ्रॉम द वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी रू कोटा बोरो करा जायची। द आइडिया ऑफ फेडरेशन विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, no. The method of presidential election, no. The emergency powers, no. Provisions concerning the suspension of fundamental rights during national emergency. तो करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर डी। ठीक अच्छी। क्वेश्चन लेवल इजी अच्छी, इजी टू मॉडरेट अच्छी। धीरे धीरे पार्ट जिते बढ़ी चलो से हिसाब से आम डेप्थ आड़ को जावा। मैच द फॉलोइंग। लेफ्ट साइड अच्छी कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स, राइट साइड अच्छी सोर्सेस। लेफ्ट साइड अच्छी रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ कोर्ट आसी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन रू। ठीक अच्छे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल एवं रिसेंटली आम डिस्कसन कले कोर्ट आसी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन रू। ठीक अच्छे। ए हो जाउची 4, बी हो जाउची 3। तो करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर बी। ठीक अच्छे। सी हो जाउची 2, कनकरेंट लिस्ट आसूची काठू ऑस्ट्रेलिया रू। तापरे डी होची 1 जोटा कि रिमेनिंग रहिला सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी जोटा कि जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन रू आसी। ठीक अच्छे। नेक्स्ट, which of the following features and their source is wrongly matched। कोटा wrongly match है। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू ब्रिटिश प्रैक्टिस भूल अच्छी। कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन रू एटा आसेनी जुडिशियल रिव्यू। तो यार करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर ए जोटा कि रॉन्ग अच्छी। आपण मैंने कहि परिबे कि जुडिशियल रिव्यू कोठू आना जाइछि कमेंट बॉक्स रे। कनकरेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया ठीक अच्छी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ठीक अच्छी। फंडामेंटल राइट यूएस कॉन्स्टिट्यूशन ठीक अच्छी। नेक्स्ट, which constitution has inspired the Indian concepts of rule of law, parliamentary system and law making procedure। तो देखो ये जगह गोटे की पॉइंट पार्लियामेंट्री सिस्टम टिके सम पूर्व आम पढ़ले को जगह आसी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन रू। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर। कौन कौन आसी इंडियन कॉन्सेप्ट्स ऑफ रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड लॉ मेकिंग प्रोसीजर। नेक्स्ट, the Constitution of India borrowed the scheme of Indian Federation from the Constitution of Federation word आसिला कौन आसिला Federation from the Constitution of कहार एटा मध्ये हमें टिके सम पूर्व देखिले कनाडा रू। ठीक अच्छे। नेक्स्ट, the Indian Constitution closely follows the constitutional system of। closely follow को constitution को करे। बहुत इजी क्वेश्चन एटा अछि। यार करेक्ट आंसर हम यूके। ठीक अच्छे। यूके ठीक अच्छे। यूके। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर कॉमन टू बोथ द इंडियन फेडरेशन एंड द अमेरिकन फेडरेशन। तो अमेरिकन फेडरेशन और इंडियन फेडरेशन मध्य कॉमन फीचर कोटा। ए सिंगल सिटीजनशिप, डुअल जुडिशियरी, 3 लिस्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन, ए फेडरल सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यार करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी। कौन हम ऑप्शन नंबर डी, a federal supreme court to interpret the constitution। Next, the inspiration of liberty, equality and fraternity was derived from। को derive करा जाइछि liberty, equality, fraternity। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम अमेरिकन रिवोल्यूशन, फ्रेंच रिवोल्यूशन। तो यार करेक्ट आंसर हम फ्रेंच रिवोल्यूशन। ठीक अच्छे। नेक्स्ट, इंडियन प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर आर ए रेप्लिका ऑफ द हेड्स ऑफ द स्टेट ऑफ व्हिच कंट्री। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और बहुत कॉमन क्वेश्चन भी देखिए। मैक्सिमम क्वेश्चन ये जगह आप कॉमन क्वेश्चन ही पाइबे।
बेसिक क्वेश्चन जोड़ा कि इंडियन प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर आर ए रेप्लिका ऑफ द हेड्स ऑफ द स्टेट ऑफ व्हिच कंट्री को कंट्री रो obviously Britain most common question correct answer habo Britain next the president of the Indian Union has the same constitutional authority as the same Britain British monarch habo yara correct answer the president of the Indian Union has the same constitutional authority as the British monarch ठीक अछि next which of the following describes India as a secular state कोड एवद्रो डिराइव करे माने डिस्क्राइब करे जे इंडिया गोटे सेक्युलर स्टेट बोली फंडामेंटल राइट नाइन्थ शेड्यूल डायरेक्टिव प्रिंसिपल प्रिएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन तो यार करेक्ट आंसर हबो ऑप्शन नंबर डी ठीक अछि नेक्स्ट इन ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रियल पावर्स ऑफ द स्टेट आर वेस्टेड इन द को जगह रे अछि रियल पावर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर हो कि नहीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर क्लियर नेक्स्ट जो जगह क्वेश्चन बुझी पार ना पॉज करिवे वीडियो क्वेश्चन को निजे थरे रीड करिवे आंसर निजे चूज करिवे कोटा हबो कि नहीं देन प्ले करिवे ठीक अछि नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कोटा या भीतर बेसिक फीचर नुह कोटा प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी तो ओबियसली प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट यार जोटा कि बेसिक फीचर नुह आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो ठीक अछि नेक्स्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज डिजाइन्ड टू वर्क एज ए यूनिटरी गवर्नमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज डिजाइन्ड टू वर्क एज ए यूनिटरी गवर्नमेंट को टाइम रे इन नॉर्मल टाइम्स नो इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी टाइम रे यूनिटरी गवर्नमेंट चले ठीक अछि नेक्स्ट Which of the following features of the Constitution of India does not resemble the American Constitution? Which of the following features of the Constitution of India does not resemble the American Constitution? कोटा not resemble कहिछि written constitution तो resemble करूछि federal form of government resemble करूछि fundamental right resemble parliamentary form कोन हबो रिजेम्बल करू नाही तो यार करेक्ट आंसर हबो ऑप्शन नंबर डी ठीक अछि नेक्स्ट फ्रॉम व्हिच ऑफ द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज अडॉप्टेड फंडामेंटल ड्यूटीज बहुत इजी क्वेश्चन हला फंडामेंटल ड्यूटीज कोठो आना जायछि अडॉप्ट कोड करा जायछि यार करेक्ट आंसर हबो यूएसएसआर जोटा के बे रशिया नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा द वर्ड सोशलिस्ट वाज एडेड टू द प्रीएम्बल इट्स मेन एम इज यार मेन एम कौन थिला सोशलिस्ट को ऐड करियार अर्थ कौन थिला प्रीएम्बल रे एलिमिनेट इनइक्वालिटी इन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेटस एलिमिनेट इनइक्वालिटी इन पॉलिटिकल एंड रिलीजियस अफेयर्स एलिमिनेट इनइक्वालिटी इन इनकम एंड स्टेटस एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ एलिमिनेट क्लास बेस्ड सोसाइटी तो यार करेक्ट आंसर कौन हम ऑप्शन नंबर ए हम यार करेक्ट आंसर देखो जदि प्रिसाइजली जड़े मन रखी न देन से ओबियसली ऑप्शन बी करेक्ट कर दे पारे कि सी कर दे पारे तो प्रिसाइजली मन रखा पड़ो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेटस रे जो एलिमिनेट करने इनइक्वालिटी सेटा को बेस करिकी सोशलिस्ट को प्रीएम्बल रे ऐड करा जायछि नेक्स्ट व्हिच ऑफ द पेयर्स इज करेक्टली मैच कोटा करेक्टली मैच बोली कहा जायछि रिपब्लिक हेड ऑफ द स्टेट इज हेरेडिटरी मोनार्क भूल सोवरेन Constitution rests on people's will. भूल Democratic Constitution does not recognize legal supremacy of another country. भूल एटा उल्टा लिखा जाइछि ठीक अछि Secular State is without any religion of its own. तो यार करेक्ट आंसर हबो ऑप्शन नंबर डी ठीक अछि नेक्स्ट देखिबा The preamble enshrines certain ideals that were first spelled out in the preambles enshrine माने प्रदर्शन माने दर्शैबा जोटा कहि परिबा the preamble enshrines certain ideals that were first spelled out in the speech by Jawaharlal Nehru on the banks of Ravi River when he called for Purna Swaraj na the Nehru report no a resolution adopted at Karachi session of the Indian National Congress INC no objectives resolution adopted by the Constituent Assembly तो यार करेक्ट आंसर कौन हम ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ठीक अच्छे नेक्स्ट
द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट रिफ्लेक्ट्स द माइंड एंड आइडियल्स ऑफ द फ्रेमर्स इज देखो यहाँ रिविजन पर्पज वीडियो करा तो ए बेसी किसी एक्सप्लेनेशन ना एक्सप्लेनेशन वीडियो जब देखा लगी चाहते देन निश्चित जोग्राफी वीडियो अच्छे मोर से देखिपारे प्लेलिस्ट प्लेलिस्ट अच्छी जोग्राफी जो थे कि ओडिशा इंडिया एवं वर्ल्ड रो सबू थ्रू किसी किसी क्वेश्चंस नहीं कि मुझे एस जनरल अवेयरनेस सीरीज भी करी जोटा कि 13टा वीडियो अच्छी से एक्सप्लेनेशन करके वीडियो करी चाहिए जब देखिपारे आपंपाई फ्रुटफुल रहिबो द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट रिफ्लेक्ट्स द माइंड एंड आइडियल्स ऑफ द फ्रेमर्स इज कौन बहुत इजी अच्छी डायरेक्टिव प्रिंसिपल फंडामेंटल राइट्स प्रिएम्बल सिटीजनशिप को पार्ट रे अच्छी ओबियसली प्रिएम्बल रे ही अच्छी कि नहीं जोटा कि रिफ्लेक्ट करे माइंड और आइडियल्स ऑफ द फ्रेमर्स नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल कोटा डिटरमाइन करे जे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है फेडरल ए रिटन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन एन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी वेस्टिंग पावर ऑफ पावर्स विथ सेंटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स करेक्ट आंसर अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स ठीक अच्छे नेक्स्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिगार्डेड एज फेडरल यूनिटरी पार्लियामेंट्री फेडरल इन फॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट देखो ये जब ऑप्शन थी केवल फेडरल देन करेक्ट आंसर हम फेडरल बट ये कौन अच्छी फेडरल इन फॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट तो ये जगह फेडरल ठू भी अधिक एम्फासिस दूसरी यही ऑप्शन तो यार करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर डी ठीक अच्छे फेडरल इन फॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट नेक्स्ट देयर इज ए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया बिकॉज इंडिया रे जो पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री सिस्टम अच्छी तो तार कारण कौन लोकसभा इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपुल ठीक कथा पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ठीक कथा राज्यसभा कैनॉट बी डिजॉल्व एटा ठीक कथा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा तो यार करेक्ट आंसर हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा ठीक अच्छे अधिक एम्फासिस कर ऑप्शन टा नेक्स्ट सेक्युलरिज्म मीन्स सेक्युलरिज्म रो अर्थ कौन सप्रेशन ऑफ ऑल रिलीजियंस wrong freedom of worship to minorities wrong separation of religion from state wrong a system of political and social philosophy that does not favor any particular religious faith the correct answer of option number D secularism means a system of political and social philosophy that does not favor any particular religious faith ठीक अच्छे तो यार करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट इन ए फेडरल स्टेट गोटे फेडरल स्टेट रे कौन रहे स्टेट्स आर मोर पावरफुल देन सेंटर कंप्लीटली रॉन्ग सेंटर इज मोर पावरफुल देन स्टेट्स नो ए प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फंक्शंस नो कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट्स division of powers between the center and states with safeguards against transgression of jurisdiction correct answer of option number D federal state का हुआ जाए constitution effects division of powers between the center and states with safeguards against transgression of jurisdiction ठीक अच्छे next India opted for a federal form of government because of फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया अडॉप्ट कला माने नेला ता रीजन कौन वास्ट टेरिटोरी थिला कल्चरल इंटीग्रेशन थिला लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डाइवर्सिटी तो यार करेक्ट आंसर हम लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डाइवर्सिटी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ठीक अच्छे ऑप्शन 4 थिला कौन एडमिनिस्ट्रेटिव और जार स्पेलिंग मिस्टेक अच्छी CON हम कन्वीनियंस ठीक अच्छे तो यहाँ भूल अच्छी तो यार करेक्ट आंसर हम लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डाइवर्सिटी नेक्स्ट The word socialist, secular, integrity of nation पर ए लगी जाइए The word socialist, secular, integrity of nation were added to our constitution by कितना नंबर अमेंडमेंट रे 42nd 44th 46th तार करेक्ट आंसर कौन हम 42nd ठीक अच्छे देखो जी भी कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होमर ताकू नहीं कि गोटे वीडियो कर से वीडियो मैक्सिमम इंपोर्टेंट अमेंडमेंट सब मेंशन करा जाइए आ से वीडियो लिंक ए वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स अवेलेबल अच्छी चाहिए जब देखिपारे आपंपाई फ्रुटफुल रहिबो नेक्स्ट इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बिकॉज इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कौन पाई देयर इज ए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय पीपल हाँ कि नहीं ठीक कथा यहाँ आमर हेड आम
माने पीपुल मान द्वारा ही इलेक्ट हुआ तापर कौन देखिए देयर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स रीजन तो यहाँ नुह डेमोक्रेटिक रो देयर इज पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी एटा भी रीजन नुह रीजन एक्चुअली कौन द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपुल से आम डेमोक्रेटिक बोली कौचे ठीक अच्छे बापरे सॉरी यार माने एरोटा टिके अलग टाइप आसी जाइए द सोर्स ऑफ इंडिया सोवरेनिटी लाइज इन द इंडिया सोर्स ऑफ इंडिया सोवरेनिटी लाइज इन द प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर पीपुल ऑफ इंडिया प्रिएम्बल टू कॉन्स्टिट्यूशन कौन हम यार करेक्ट आंसर प्रिएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन रे आम इंडिया सोवरेनिटी लाइज करुची नेक्स्ट द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट हिंदी शॉल बी कॉन्स्टिट्यूशन हिसाब रे हिंदी कौन हवा दरकार द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया द लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट्स द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया ये दुटा भितर बहुत जन माने कन्फ्यूज हो पारती तो यार किंतु करेक्ट आंसर हम ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया क्लियर नेक्स्ट व्हाट इज द मिनिमम परमिसिबल एज फॉर एम्प्लॉयमेंट इन एनी फैक्ट्री और माइन मिनिमम एज केते 12 14 16 18 यार करेक्ट आंसर हम 14 बहुत जन 18 भी कह दियंती बट करेक्ट आंसर हम 14 ठीक अच्छे नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडीशन फॉर बिकमिंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया या भीतर कोटा कंडीशन नुह बर्थ ठीक अच्छे एक्वायरिंग प्रॉपर्टी नुह डिसेंट ठीक अच्छे नेचुरलाइजेशन ठीक अच्छे तो यार करेक्ट आंसर हम जेहेतु कही नॉट ए कंडीशन एक्वायरिंग प्रॉपर्टी ठीक अच्छे नेक्स्ट who is competent to prescribe conditions as for acquiring Indian citizenship who is competent to prescribe conditions as for acquiring Indian citizenship parliament state legislature president attorney general समस्ते जानचे बहुत कॉमन क्वेश्चन यार करेक्ट आंसर कौन हम स्टेट कहूँ पार्लियामेंट ठीक अच्छे पार्लियामेंट ही सब डिसाइड करे कंडीशंस केमती कौन रहिबो कौन नहीं देखो इंडियन सिटीजनशिप पाइबापी कौन कौन रिक्वायरमेंट रही कौन केमती कौन रहा दरकार कंडीशंस रही रिगार्डिंग मो बोधे मो जो जनरल अवेयरनेस सीरीज रे पार्ट 11 और 12 रे मेंशन करिछि आपण चाहिए जदि देखिपारे बुझीपारे हेतरे मु भलसे बुझीबा चेष्टा करिछि निश्चित देखिबे बुझीजिबे नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एक्विजिशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप इज करेक्ट कोटा करेक्ट कहिछि ठीक अछि कोटा करेक्ट कहिछि इफ सिटीजनशिप इज टू बी एक्वायर्ड बाय रजिस्ट्रेशन 6 मंथ भूल अछि इफ सिटीजनशिप इज टू बी एक्वायर्ड बाय नेचुरलाइजेशन द पर्सन कंसर्न्ड मस्ट हैव रिसाइडेड इन इंडिया 5 years भूल अछि इफ born in India only that person can acquire citizenship at least one of whose parent is an Indian तो यार करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर सी ठीक अछि सिटीजनशिप कंडीशन जानी निहाती दरकार क्वेश्चन आंसर करने अकॉर्डिंग टू सिटीजनशिप एक्ट 1955 इंडियन सिटीजनशिप कैन नॉट बी एक्वायर्ड बाय ऑप्शन देखिबा चिल्ड्रेन ऑफ द डिप्लोमेटिक पर्सनल और एलियन एनिमीज बोर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर 26 January 1950 कौन कही इंडियन सिटीजनशिप कैन नॉट बी एक्वायर्ड ना कैन नॉट बी एक्वायर्ड हेले तो एटा कंडीशन नुह चिल्ड्रेन born of Indian citizen abroad ठीक अच्छे इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटोरी नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इंडिया एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ठीक अच्छे नेचुरलाइजेशन तो ओबियसली ठीक ही अच्छी तो यार करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर जोटा कि रॉन्ग अच्छी ठीक अच्छे जोटा कि एमती एक्वायर करा जाय परिबो नाही नेक्स्ट सिटीजनशिप प्रोविजन आर एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन कोथरे अच्छी सिटीजनशिप रो प्रोविजन सबू पार्ट 2 रे अच्छी तो पार्ट 2 रो प्रिसाइजली जदि देखिया आर्टिकल 5 to 11 ठीक अच्छे जी आर्टिकल अच्छी इंपोर्टाट आर्टिकल से गुड़िक मन रखा पड़ो तो आर्टिकल 5 to 11 रे अच्छी पार्ट नंबर 2 रे ठीक अच्छे नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डिस्क्राइब्स अबाउट द पर्सन वॉलंटरी एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ ए फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन कौन कह व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डिस्क्राइब्स अबाउट द पर्सन वॉलंटरी एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ ए फॉरेन स्टेट वॉलंटरी एक्वायर करिछि नॉट टू बी सिटीजन्स तो एटा को आर्टिकल लिखा जाइछि सिटीजनशिप माने से ए देशर हबनी माने आम इंडिया रो जदि से वॉलंटरी कोठी को फॉरेन स्टेट रे एक्वायर करिछि को आर्टिकल लिखा जाइछि ए विषय रे
आर्टिकल 9 मोस्ट इंपोर्टेंट मन रखिथिबे नेक्स्ट आर्टिकल 6 enshrines the provision conferring rights of citizenship of certain persons who have migrated to India from Pakistan which one of the following provisions is incorrect या तो कोडा incorrect माइग्रेट होते पाकिस्तान रु माने पलई थे पार्टीशन पर पुणी रिटर्न आसी थे बुझीपार कंडीशन तो या भर कोटा इनकरेक्ट अच्छी से देखा ठीक अच्छे He or either of his parents or any his grandparents was born in India as defined in the Government of India Act 1935. Such person has so migrated before 19 July 1948. Such person has so migrated on or after the 19th July 1948. He has been registered as a citizen. Such person has got married in India. ठीक अच्छे तार करेक्ट आंसर माने जोटा कि इनकरेक्ट जदि अच्छी देखा इनकरेक्ट जदि अच्छी देन ऑप्शन ए हम इनकरेक्ट 1935 एक्ट दीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तार करेक्ट आंसर कौन हम ए जोटा कि इनकरेक्ट अच्छी है नेक्स्ट डिटेल्स ऑन हाउ सिटीजनशिप देखो जो जगह आपको भूल लगुच से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जनइबे मु निश्चित ताको रिव्यू करी डिटेल्स ऑन हाउ सिटीजनशिप मे बी एक्वायर्ड एंड टर्मिनेटेड आर enumerated in detail on how citizenship may be acquired को जगह और terminate केमती करा जीवो part 2 of the constitution the citizenship act 1955 schedule first of the constitution various enactment by parliament कौन होबो यार करेक्ट आंसर the citizenship act 1955 रे मेंशन अछि ठीक अछि नेक्स्ट in Indian citizenship of a person can be terminated if केतले टर्मिनेट करा जाई पारिबो चारिटा ऑप्शन भितरु मे बी सब जाक भी ठीक है पारे कोटा भी भूल है पारे एमती तो याद कोटा ठीक हबो ए पर्सन वॉलंटरी एक्वायर्स द सिटीजनशिप ऑफ सम अदर कंट्री वॉलंटरी एक्वायर करी पारिबो तो देइछि कोन इंडियन सिटीजनशिप ऑफ ए पर्सन कैन बी टर्मिनेट हबो ओ टर्मिनेट हबो तो ऑप्शन एटा ठीक अच्छे माने टर्मिनेट हो पार जदि गोटे पर्सन वॉलंटरी एक्वायर करे टिके समय पूर्व जमी कहली अलग देशर सिटीजनशिप तो टर्मिनेट हो पार कौन देछि ए पर्सन हु हैज बिकम ए सिटीजन थ्रू रजिस्ट्रेशन इज सेंटेंस टू imprisonment for not less than 10 years within 5 years of his registration तो या द्वारा तो टर्मिनेट हेनी यहाँ तो टर्मिनेट हम ना वन टा तो टर्मिनेट करदेव टूटा हेनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सैटिस्फाइड दैट सिटीजनशिप वाज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड जदि एमती धरब तो ओबियसली फ्रॉड रे जदि धरब टर्मिनेट ही कर ए पर्सन हु इज सिटीजन बाय बर्थ इंडल्जेस इन ट्रेड विथ एन एनिमी कंट्री ड्यूरिंग वार तो ओबियसली वार टाइम रे जदि ट्रेड करिवो एनिमी कंट्री सहित टर्मिनेट कर दिया जिवो तो कौन कौन होची चारिटा होची जोटा कि टर्मिनेट करूची तापरे 3टा गोटे टर्मिनेट करूची जेतु फ्रॉड अछि आ फर्स्ट जेतु वॉलंटरी एक्वायर करूची सिटीजनशिप जोटा कि टर्मिनेट करूची 1 2 4 सॉरी 2 केमती कहली 1 3 4 2टा तो हबनी 2टा तो टर्मिनेट करिवनी 1 3 4 1 3 4 गोटी अछि सी ऑप्शन सी हबो यार करेक्ट आंसर ठीक अछि नेक्स्ट A person can become a citizen of India even if born outside India if his or her कौन जारे कहला कंडीशंस कौन देखो कंडीशन जानिबा निहाती दरकार ए पर्सन कैन बिकम ए सिटीजन ऑफ इंडिया केतले सिटीजन ऑफ इंडिया हे परिबो जेतेबेले बाहर जन्म होइथिबो किंतु तार हिज और हार लिखा जाइछे माने तार बापा किबा माँ ठीक अछि तो फादर इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया मदर इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया कंपलसरी तो नुह जे केवल फादर हवा दरकार कंपलसरी नुह जे केवल मदर हवा दरकार एटी कौन दिया फादर इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ द पर्सन्स बर्थ एजार केवल फादर को एम्फासिस दिया जाइए हेनी फादर और मदर इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ द पर्सन्स बर्थ बुझीगला बापा किंबा माँ कंपलसरी नुह जे केवल बापा जन्म होता दरकार कि माँ को जन्म होता दरकार माने सिटीजन होता दरकार इंडिया रो ठीक अच्छे तार करेक्ट आंसर कौन हम ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट To acquire citizenship by registration, a person must have been resident in India for immediately before making an application. एटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो केते वर्ष रही दरकार 6 months 1 year 3 years 7 years तो यार करेक्ट आंसर होची 7 year मन रखिबे 7 year ठीक अछि नेक्स्ट
Which of the following rights described by Dr. B.R. Ambedkar as the heart and soul of the Constitution? बहुत इजी क्वेश्चन है गला आम समस्ते जानिछे कोन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज नेक्स्ट जोटा को द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नेक्स्ट which of the following fundamental rights is also available to a foreigner on the soil of India एटा जानिबा दरकार निहाती which of the following fundamental rights is also available to a foreigner on the soil of India equality of opportunity in the matter of public employment no freedom of movement residence and profession no protection from discrimination of the grounds only of religion race caste and ठीक अच्छे तो यहाँ ऑप्शन सी कौन हम यार हेनी माने जोटा कि फंडामेंटल राइट ताको दिया जाउनी किंतु देखो ऑप्शन डी रे कौन लिखा जाए प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एगेंस्ट एक्शन विथआउट अथॉरिटी ऑफ लॉ प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एगेंस्ट एक्शन विथआउट अथॉरिटी ऑफ लॉ तो यार करेक्ट आंसर हम जोटा कि प्रोटेक्शन फंडामेंटल राइट ताको दिया जाए ऑप्शन नंबर डी ठीक अच्छे ऊपर तीनटा हेनी नेक्स्ट प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज इन इन पढ़ली इज envisaged in which of the following articles माने प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज को जगह मेंशन करा जाइछि आर्टिकल रे 14 19 29 32 मन रखिबे 29 ठीक अछि आर्टिकल 29 जोतरे कि प्रोटेक्शन करा जाउछि इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज नेक्स्ट On whom does the Constitution confer special responsibilities for the enforcement of fundamental rights? On whom does the Constitution confer special responsibility for the enforcement of fundamental rights? Supreme Court यार करेक्ट आंसर हम obviously Supreme Court हाँ कि नहीं पार्लियामेंट हेनी प्रेसिडेंट हेनी स्टेट लेजिस्लेचर हेनी सुप्रीम कोर्ट हम यार करेक्ट आंसर नेक्स्ट Under which article of the Constitution are the cultural and educational rights granted? Cultural rights और educational rights grant करा जाउछि को आर्टिकल रे आर्टिकल 29 31 29 32 29 तो हबो ठीक अछि तापर कोन हबो 31 हबो कि 32 हबो कि 30 हबो मन रखिबे 30 हबो 29 और 30 रे मेंशन करा जाइछि नेक्स्ट Which of the following is not specifically mentioned in Article 19 of Constitution? बहुत इजी क्वेश्चन है गला या तो कोटा स्पेसिफिकली मेंशन करा जाय नाही आर्टिकल 19 रे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मेंशन अच्छी फ्रीडम ऑफ असेंबल पीसफुली विथआउट आर्म्स मेंशन फ्रीडम टू मूव फ्रीली मेंशन फ्रीडम ऑफ द प्रेस जोटा कि मेंशन नाही तो यार करेक्ट आंसर होबो कोन ऑप्शन नंबर डी ठीक अछि तो वीडियो केमती लगा कमेंट बॉक्स रे कमेंट करके निश्चित जनबे जो मैंने फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट करछंती सब्सक्राइब करके निजरो सपोर्ट निश्चित देबे और जो मैंने भी फर्स्ट टू लास्ट पर्यंत देखि जंती से मानको मोर धन्यवाद।